new chapter in defense and tech. Okay, so basically it is mentioning about India US. They inaugurated their initiative on, you can say, critical and emerging technologies. So this is how things are going to turn up here. Means it is going to transfer, it is going to facilitate joint production, joint development of technology, and we will end up learning new things from United States. So India US, if you look into, if you compare their abilities, technology की अगर हम compare करेंगे, they are far ahead of us. Okay, be it any area, space की बात कर लो, चाहे आप defense की बात कर लो, they are far ahead of us. Now in this particular case, if we are thinking of developing something like this, an idea where we will be working together, where we will be talking about co-development, co-production. अब बात है कि इस इनिशिएटिव के अंदर वी आर सिलेक्टिंग 6 डिफरेंट एरियाज जहां पे हम को प्रोडक्शन को डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं. सो दे आर लाइक स्ट्रेंथनिंग द इकोसिस्टम, डिफेंस इकोसिस्टम, टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन, रेजिलिएंट सेमीकंडक्टर सप्लाई, स्पेस, साइंस टेक, मैनेजमेंट टैलेंट, नेक्स्ट जनरेशन टेलीकॉम. So these are the major areas where we are cooperating with each other, and now we are having good equation with US. So you are not cooperating when it comes to technology development. Defense ties, security ties, those things are also there. Okay, हम काफी अच्छे से एक दूसरे के साथ coordinate करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, and you can say that our relationship with US, it is complementary to each other. One thing is this: we have the bond of democracy. एक दूसरे के साथ डेमोक्रेसी का बॉन्ड आप लेके चलते हो. इट मीन्स दैट देयर इज एन एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट. ओके, एंड इफ वी टॉक अबाउट द ग्लोबल गोल्स, बोथ कंट्रीज दे आर अलाइनिंग देयर नेशनल इंटरेस्ट. दोनों के नेशनल इंटरेस्ट कहीं ना कहीं अलाइन होते हैं. ओके, एंड हियर दिस इज वन प्लेस वी आर वर्किंग टुगेदर, इसलिए हम साथ में चल रहे हैं. So this is the major thing that is there. Now थोड़ा past में चलते हैं, what things had been in the past. So entire generation of Indian nuclear scientists, they were trained in US, but later on there were developments which were not liked by United States, that we ended up going ahead with our nuclear blast in 1974. अब ये चीज United States को पसंद नहीं आई, that India became nuclear, and they imposed sanctions on us. So for say somewhere around 30 years, India was denied the US technology. US की वो टेक्नोलॉजी जो लेटेस्ट थी, जो क्वालिटी में सोवियत यूनियन USSR की टेक्नोलॉजी से बेटर थी, वो हमें डिनाई होती है यहाँ पे. एंड वी हैड नो अदर चॉइस अपार्ट फ्रॉम गेटिंग क्लोजर टू सोवियत यूनियन. हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं थी. भाई आपको अपने कंट्री को मॉडर्न बनाना है, यू हैव टू टेक हेल्प फ्रॉम वेर एवर यू आर गेटिंग इट. सो यूएस वॉज डिनाइंग दैट हेल्प टू अस, बट वी वर गेटिंग इट फ्रॉम द सोवियत यूनियन, और हमने आगे बढ़ गए. ओके, दैट वॉज हाउ थिंग्स वेंट अहेड. नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट दिस थिंग हियर, दीज आर द डेवलपमेंट्स. सो देखिए, बांग्लादेश वॉर, 1974 न्यूक्लियर टेस्ट, these developments led that India ended up closer to USSR. अब देखिए बात क्या हुई है. At that time, before that, US was ready to help us with the development of engine. और आज अगर हम इंडियन फाइटर जेट या 5th जनरेशनल प्लेन बनाना चाहते हैं, या हम फाइटर जेट्स बनाना चाहते हैं, the major impediment, major problem is this: we don't have domestic production of engines. इंडिया के अंदर इंजन्स का डोमेस्टिक प्रोडक्शन नहीं होता है. सो अर्लियर यूएस वाज रेडी टू हेल्प अस, बट बिकॉज वी एंडेड अप विद न्यूक्लियर ब्लास्ट, they didn't like it and they were not ready to share their technology with us. These were the developments. Now you just figure it out. ये सब चल रहा था. So बांग्लादेश वॉर हुआ, ये सब आगे बड़ी बात. Okay, in 1987 US agreed to assist India's light combat aircraft तेजस प्रोग्राम. अब ये 20 साल से प्रोग्राम चल रहा था और हमने प्लेन बनाने में बहुत डिले किया मेजरली, बिकॉज वी वर नॉट हैविंग दैट कैपेबिलिटी. बट व्हेन वी कैरिड आउट अनदर न्यूक्लियर ब्लास्ट, यूएस वाज अगेन नॉट हैप्पी विद दोज डेवलपमेंट्स. उससे भी यूएस खुश नहीं हुआ. सो दीज वर द मेजर थिंग्स दैट हैड हैपेंड इन द पास्ट. बट राइट नाउ विद दिस इनिशिएटिव वी कैन टॉक अबाउट जॉइंट प्रोडक्शन, joint development of the technology,
So this is one such opportunity for us, where it can help you in creation of domestic production of these engines. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके साथ the technology, if it is there with you, there on your land, you will end up developing other engines and other technologies associated with this. अभी आप हर चीज के लिए इंपोर्ट डिपेंडेंट हो, दूसरे कंट्री से लेके आना पड़ता है आपको. तेजस ठीक है, वी हैव डेवलप्ड दैट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट, बट इंजन्स वी आर स्टिल गेटिंग इट फ्रॉम यूएस. जनरल इलेक्ट्रिकल्स का उसमें इंजन लग रहा है, वही इंजन आप यहां पे भी बनाओगे. द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल बी लेस, इट विल क्रिएट जॉब्स, it will facilitate, it will train your engineers. So these are the additional benefits that we are going to have with this particular deal. It's a definitely good deal with us. Okay, now when we talk about India US relationship, in mains 2019 this was the question, that what introduces friction into ties between India and US. Okay, as US is still unable to find for India a position in its global strategy. देखिए स्ट्रेटजी के अंदर इंडिया की पोजीशन फिक्स्ड है. इंडिया इज अ नॉन नेटो अलाय, क्लियर, नॉन नेटो अलाय है, मेजर डिफेंस पार्टनर है. सो दे हैव बीन, इंडिया हैज बीन गिवन दिस पर्टिकुलर स्टैट्यूटरी स्टेटस. ये यूएस के लॉ के अकॉर्डिंग चलता है सिस्टम. मेजर डिफेंस पार्टनर, दिस इज द इक्वेशन दैट वी आर एंजॉइंग. वी आर हैविंग strategic ties with each other. Okay, so in this way we are aligning our goals. Yes, differences हैं. आज की डेट में भी रशिया यूक्रेन वॉर, if we talk about it, there are differences. Majorly in the sense that अब UN के अंदर वोटिंग होती है, क्लियर, इंडिया abstains. इंडिया उस वोटिंग में पार्ट नहीं लेता कभी भी. रशिया के अगेंस्ट अगर जो वोटिंग होगी, इंडिया won't take part in that. So US would like India to take stance or stand that is against Russia, but हम नहीं ले सकते. US wanted that India should not buy S-400 anti-missile system from Russia, लेकिन हमने ये भी खरीदा. US didn't want India to buy oil from Russia, but we went ahead. See, every country is guided by their national interest. ठीक है ना, सब अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से चलते हैं, तो इसमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है. एंड दे डू रियलाइज द पोजीशन ऑफ इंडिया, दैट रशिया हैड बीन आवर गुड फ्रेंड एंड वी हैड टू मेंटेन दैट फ्रेंडशिप. नॉट ओनली दैट, दीज आर द जेन्युइन डिफेंस एंड द सिक्योरिटी इंटरेस्ट दैट इंडिया इज शोइंग. ये हमारी एनर्जी सिक्योरिटी से रिलेटेड मामला है. आपको अपने डिफेंसेस को स्ट्रॉन्ग करना है. चाइना के पास भी तो एंटी मिसाइल सिस्टम है, तो यू हैव टू डेवलप दैट एबिलिटी. क्लियर है? So this was a major thing here. ये एक major point है.